वाला वो खड़ा है। अब तू मेरे को बताएगा विजय मारू वही गलत बात है। मैं भी करता हूँ माइक दिया रहेगा, माइक दिया है ऑडियो आउटपुट में दिया है। कितना ऑडियो है कहाँ पे वहाँ जाएगा। संचित बैठ गए। आशीष Let's hear a big round of applause, everyone. रोहन आप आगे नीचे बैठ। Would now request Mr. Vicky Kaushal and all of you to unveil the Men's Health Awareness Campaign, #Let's Mention It. Would request Dr. Kalpana and Dr. Patkar to please join. To all the men who seek greatness while striving to maintain equality. Now I'd like to invite Dr. Kalpana Sarangi to throw light on the first of its kind aesthetic clinic for men, which we have launched today. The stage is all yours. Thank you so much. At the outset, I'd like to thank Mr. Aditya Soi for being here today, and Mangla ma'am, Dr. Patkar, for making the skin aesthetic clinic for men a possibility. And मुझे तो लगा कि क्लास लग रही है।
Yes, ma'am. Firstly, hello, everybody. I am very thrilled to be here, and this is a pleasant surprise to have an audience over here, and a very good-looking audience, I must say. The men in the room are looking rather aesthetic. I'm very happy to be getting this word attached to men. Aesthetic ना मुझे ऐसा लगता है ना हमारे पास patience है ना awareness है aesthetics की. So I'm very happy कि एक initiative हो रहा है जिसके लिए men के लिए aesthetic ये शब्द attach किया जा रहा है. And thank you Dr. Kalpana for having me here. I'm very happy to be here. Firstly because of you. मैं अभी यहाँ पे बहुत तमीज से डॉक्टर कल्पना बुला रहा हूँ. मैं बचपन से आंटी बुला रहा हूँ. अभी सबके सामने बुलाना नहीं है मुझे तो मैं डॉक्टर कल्पना. But Nanavati has been a very special place for me. It's played a very big part in mine and my family's life. Like my father has had some health issues where it's reached a point of that we might not have him, and it was Nanavati where we got him back. So at that time I was just a kid and I didn't know it was that serious. So it not just like got him back, but also never made me feel that we were going through such a difficult time. It's only when me and my brother, we grew up and we kind of understood the technicalities involved. And I must thank Dr. Ashok Khatolkar for that. He's very dear to us. And Dr. Kalpana has been like a family to us. So again, thank you for making me a part of this, because यहाँ पे मैं बचपन में I used to study in Mithibai College. And when we were going through this problem, my dad was hospitalized here while I was doing my junior college in Mithibai. So I still remember I used to pick up my bag with this headphone लगा के म्यूजिक सुनता हुआ चलते हुए नानावाटी आता था कि कॉलेज के बाद मुझे नानावाटी जाके डैड के साथ रात में यहाँ रुकना है. So to come back here like this with such warm welcome and so much love is like completing a full circle. So thank you so much for making me feel so special. And with regards to let's mention it, I really do believe in this truly, because like I said ना हमारे पास patience है ना awareness है. मुझे याद है अभी तक मैं पहली बार जब डॉक्टर कल्पना के पास गया था, and I've had major acne issues when I was a teenager, and till my late 20s. I'm 34 right now. Until my late 20s, I had like major acne issues. And मुझे अभी भी याद है that moment when the first time she said facial करवा ले. I said मैं? ये हम थोड़ा करवाते हैं. Facial technically फिर उन्होंने सुना है ये होता है facial. अच्छी तो ज़रूरत है शायद मुझे. But then she has made me aware, and I'm so happy that I had her in my life who made me so aware, and also it helped me in my profession because it's required. I show my face to the camera almost every day of my life, and it took me time to understand that it's not vanity, it's health. It's just another aspect of health. हमें लगता है health मतलब ये सर्दी जुकाम हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, यही health है जो हमें ध्यान रखना. But it's this also, where you know आपकी skin कैसी है, आपकी scalp कैसी है, all of that plays an important role as well. So I'm just very happy with this initiative. Let's mention it, and I'm happy that I got to be a small part of this great new noble start. And thank you. इससे ज़्यादा मुझे बोलना आता नहीं. अब आपके पास कुछ सवाल होंगे तो I'm very happy to answer them. But yes. Sir, I have a question for you. हाँ जी sir. So what is your message for men on this International Men's Day? But just men के लिए यही होगा कि be sensitive. There's no shame in being sensitive. Usually that's not a word we attach to men. We are always conditioned and taught to not be sensitive. So be sensitive emotionally, be sensitive on a surface level, be sensitive about skin care, be sensitive about everything, and it's very much a part of being a man. You know, once we are sensitive, we understand what's going on, and that's when we can take care of it. So go against the conditioning of being a man, of not be sensitive and be rough and tough. Sure, be rough and tough, but be sensitive also. That was wonderful. Thank you so much. Thank you.
Hello, good evening, Vicky Hi, sir. hi. So, how do you ensure your health and well-being? Firstly, for me, my health and well-being starts on a mental note because if I feel everything else follows after that. So I fall back on my family and I fall back on my closest friends for that. Till that is secure, everything else will follow. So for me, mental health comes first, and then uske baad mein, when it comes to physical health, I make sure I'm eating right, I'm sleeping well, and I'm drinking water, hydrating well. That's what I take care of. इससे ज़्यादा मुझे technical knowledge नहीं है, and of course I rely heavily on doctors to give me guidance on everything that I do in terms of health. And you all don't know much, but मेरी बीवी is like a चलता फिरता doctor. She is a scientist. उन्हें बहुत ज्ञान है और कुछ ज़्यादा ही ज्ञान है कई बार. But she helps me a lot with making sure I'm eating well and like taking care of myself and I'm sleeping well and I'm not just running around for work and everything. So yeah, just that. Thank you, sir. Hi. So, you are a role model for the millions of boys. So, what are the 3 things you have to tell them? If you want to mention something special, 3 things, what will be that? Oh, first thing I would say that please keep watching my films. रोल मॉडल बना रहा हूँ मैं. दूसरा यार just I mean मुझे ज़्यादा ऐसे कुछ deep ये ज्ञान नहीं आता मुझे देना, but खुश रहो और make sure that the environment you're in, the people you meet, they are happy because of you. And once that exchange is sorted. See, for me, when I go on set and do my work, mainly, of course, my work is important and I give 100% to that. That's my personal process. But I do make an effort to know that if I left that place, people had a good day because of me. You know, they smiled because of me, and that gives me a lot of strength. That makes me go into a lot of positive space. And I think if we care about that, like we care a lot about like I should be happy. But if we keep caring about that also, here I met somebody जिसके साथ मुझे कोई काम नहीं था, but he was happy to meet me. I think that exchange is good on a big longer run. So I guess that. उनका deep knowledge देने लायक है, बहुत ज़्यादा deep दे दिया है. But just that. Thank you. Thank you. You were there in the video, sir, right? आपके aesthetics काफी strong हैं. Hi, I'm Dr. Ashwini here. Hi, bye. Hi. So, success and career are equivocal. And we all know career is the cornerstone of a man's life. And yes, success comes with failures. So, can you please enlighten us how to overcome these failures, how to overcome these setbacks, and how to again succeed after these setbacks? Ma'am, there's a great poetry by Rudyard Kipling called If. And in that, there's a line which says, success and failure both are imposters. Don't take success too seriously, don't take failures too seriously. It's a process, dono aayenge, dono jayenge. And I was very happy and lucky to read that poetry in my college. And I still remember I had that poetry just for this line in my cupboard. I had stuck this just to always remember. Because that's what Dad told me. Dad is from the same industry in a very small way. And he told me that it's not a secure job. आपको monthly paycheck नहीं मिलता, Saturday Sunday छुट्टी नहीं मिलती. दिवाली की छुट्टी शायद ना मिले तो इट्स और अगर आप काम कर रहे हो तो हो सकता है आप 24 घंटे काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आप 1 महीना घर बैठे हो. सो सक्सेस भी देखोगे, फेलियर भी देखोगे. इस लाइन में बड़े से बड़ों ने सक्सेस देखा और बड़े से बड़ों ने फेलियर देखा है. सो ही वाज प्रेपिंग मी फॉर दैट एंड इन दैट प्रोसेस आई केम अक्रॉस दिस पोएट्री called If, and in that really resonated with me, that they really are imposters. हम उसे कितनी अहमियत देते हैं is what is the problem. हम कभी सक्सेस को बहुत अहमियत दे देते हैं और फेलियर को भी बहुत अहमियत दे देते हैं. I don't take any of them seriously. What matters to me is कि if I was asked to do a film, in that film, in the process, if I really enjoyed or learned something, that for me is what I wanted out of it. वो film successful होगी या नहीं होगी, it's not in my hands, so I don't worry about it too much beyond the point. And if I really enjoy the process, then I'll never be disappointed because my process will always be going on till my last day in life. So I guess हमें success हमारे लिए मायने क्या रखता है वो important है. अगर if I'm going to sleep with a calm, peaceful mind, that for me is a successful day rather than कि यार मेरे picture में कितना कमाया,
या किसने क्या, मैंने क्या कर लिया, वो मेरे लिए सक्सेस ज़्यादा नहीं है जितना कि हाँ मेरी फैमिली खुश है, मेरे दोस्त खुश हैं, मैं खुश हूँ. And today I gave my best effort. Tomorrow I want to just give a better effort than today. Till the time that is happening, I am happy. So I don't personally, my cheat code to that is to not take any of that seriously. अगर success seriously लोगे आपको failure भी seriously लगेगा, और vice versa. So I follow this. So I'm saying that because आपके profession में भी there is no 9 to 5, and I want to take this opportunity to really say that in the past few years जब सब घर पे बैठे थे, I think we have all understood who the real heroes are, and it's you. So really, thank you. You know, and I spoke to a friend of mine. She's in the States right now, and she used to be with me when we were studying in Vicky Kaushal, and we were both science students. मैंने मेडिकल नहीं ली क्योंकि मुझे लगता था यार इसमें बहुत पढ़ाई है, और and I was fond of math, so I took up engineering and I followed engineering, and she took up medical and she's a doctor in Atlanta today. And when we were going through COVID times, I called her up and I chatted with her and I was like यार you know आज लग रहा है कि हर घर में एक डॉक्टर क्यों नहीं है. And thank you for choosing, thank you. And it's I kind of in some way know it's so difficult. And it's so like there's no monotony, there's no structure, and you have to be there at the middle of the night or kabhi bhi. But thank you for getting this skill from me. Thank you. Hanji. Hi Vicky. Hi. I'm from Medical College too. Would you like to come back to our college this year? I want to come back. Nobody from Medical has ever called me back. Huh? We'll invite you this year. Please बुलाओ, मैं आ जाता हूँ, मैं बहुत वेल हूँ. नहीं मैं आ जाऊँगा. It will be lovely to come back. Thank you. So I'm guessing that's all. We all wrapped then. Okay, thanks. So thank you so much for your insights. And your words actually resonate aptly to the campaign that we have. Our core purpose to create awareness about, among wellness about men. Again, sir, thank you so much for your overwhelming presence. Let us thank him once again with a big round of applause, everyone. Thank you, Dr. Kalpana, again for having me here. Thank you to all the doctors over here. Thank you so much for everything that you do, and all the best for your careers. And, yeah, thank you. मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ. How's it going? Thank you. Now I would like to welcome our guiding light and head of Nanavati Mastiz, the Speciality. इस तरह का इनिशिएटिव काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है और आप आए यहाँ इस इनिशिएटिव में. हाँ जी. नो आई एम वेरी हैप्पी. मैं बहुत खुश हूँ कि इस इनिशिएटिव का मुझे हिस्सा बनाया गया बाय नानावटी हॉस्पिटल एंड डॉक्टर कल्पना सारंगी. मैं पहले भी यही मेंशन कर रहा था कि मेन यूजुअली हमें ना अवेयरनेस नहीं होती, ना ही पेशेंस होता है कि स्किन रिलेटेड भी हेल्थ ही होता है. हमें लगता है वो वैनिटी है, वो एक्स्ट्रा है, यार ये तो औरतें ही करती हैं, बट इट्स रिलेटेड टू हेल्थ, एंड वट एवर इज रिलेटेड टू हेल्थ तो उसका मेरे हिसाब से कोई जेंडर नहीं होता. सो आई थिंक इट्स अ लवली इनिशिएटिव. लेट्स मेंशन इट. हैशटैग जो मेन को अवेयर कर रहा है कि इट्स नॉट जस्ट वैनिटी बल्कि इट्स अ फुल हेल्थ केयर. कोई यादें आप शेयर कर रहे थे, कोई और बातें अगर आप बोलना चाहो नानावटी की. मीठीबाई कॉलेज भी नज़दीक है, कुछ बचपन की यादें आपने काफ़ी. नहीं, नानावटी में हमारे फैमिली का एक पर्सनल कनेक्शन रहा है, एंड ऑल थैंक्स टू डॉक्टर अशोक खतोलकर ओवर हियर इन नानावटी, जिन्होंने लिटरली हमारी फैमिली का बहुत ध्यान रखा है. हमारे फैमिली में पापा के कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थे जो बहुत क्रिटिकल थे, एंड बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर अशोक खतोलकर एंड द होल फैकल्टी ऑफ नानावटी हॉस्पिटल, इट गॉट टेकन केयर ऑफ. हम सिर्फ बच्चे ही थे, मैं और सनी, but still now when we look back at it we are very very grateful to Nanavati Hospital. Vicky sir, आप भी काफ़ी फिट माने जाते हैं और टीना भी फिटनेस पे बहुत ध्यान देती है. कभी ऐसा होता है मतलब एक दूसरे को टिप्स देने का मौका मिलता है और एक फिटनेस को लेकर डिस्कशन होता है आप लोगों? नहीं, उनके साथ मैं दे नहीं पाता हूँ, सिर्फ मैं ले रहा हूँ टिप्स और बहुत यूज़फुल टिप्स होता है. लाइक आपने कहा कि शी इज़ इनटू फिटनेस, एंड
शी इज़ गॉट द राइट नॉलेज. तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है व्हेन इट कम्स टू फिटनेस फ्रॉम हर. बोल रहे थे कुछ बहुत बड़ी इस बारे में बहुत बड़ी साइंटिस्ट है वो. नहीं, it's just that she's very very particular about fitness, and rightfully so. वो होना भी चाहिए इस लाइन में. when you don't have specific working hours, आप कई बार लगातार 2-2 3-3 दिन काम कर रहे होते हो without any sleep and everything. You need to know कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और फिट कैसे रहें उसमें. when it's a requirement in our profession, so that way फिटनेस मंत्र क्या आप कैसे खुद को मतलब. अच्छी नींद, अच्छा खाना और खूब पानी पीते रहो. अच्छे थॉट्स रखो और लोगों के साथ अच्छे रहो. ये सब चीज़ें सही है तो आप मेंटली फिजिकली मेरे हिसाब से आप खुश रहते हो. आप खुश हो तो फिट हो, मुझे ऐसा लगता है. आपने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया करण जोहर के साथ, काफी चर्चा में है वो वीडियो. जी. बताना चाहोगे मोर यू वांट टू से अबाउट दैट वीडियो? हमारी फिल्म आ रही है गोविंदा नाम मेरा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे. तो उसकी एक पहली झलक थी. पहला एक आपको ये बताने के लिए कि क्या मूड है फिल्म का. अब धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे, पोस्टर्स भी आएंगे, ट्रेलर भी आएगा, डेट भी आएगा कि कब आ रही है. सो फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट. एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अभी तक बहुत सारे इंटेंस रोल्स किए हैं. ये पहली बार एक कॉमेडी के अवतार में मुझे आने का मौका मिल रहा है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. लोगों को लग भी रहा था कि गोविंदा जी की बायोपिक, आपने भी पहले ही जिक्र में किया गोविंदा जी की बायोपिक. नहीं हमने तो कभी नहीं बोला. नहीं हाँ, वो तो मजाक में था. करेक्ट. हाँ कुछ बताना चाहोगे गोविंदा जी से कितना रिलेटेबल है? नहीं, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी. इट्स नॉट अ बायोपिक. एंड आपको धीरे धीरे जैसे जैसे और क्रिएटिव्स आएंगे, इन्फॉर्मेशन आएगी, आपको पता लग जाएगा. देखिए एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा. आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है अश्वत्थामा जी, और काफी समय से वो बनने की कोशिश में थी. बीच में पैंडेमिक आ गया. जी. अब कहा जा रहा है कि सामंता के साथ वो बनाई जाएगी. जी. क्या वो प्रोजेक्ट वापस ट्रैक पर आ गया है? कब शूटिंग शुरू होगी? इसके बारे में कुछ बता सकेंगे? जी, फाइनल डिटेल्स तो मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा. बट हाँ, उसको एक अभी सेकंड लाइफ तो मिला है. एंड दे आर वर्किंग आउट एवरीथिंग, ऑल द लॉजिस्टिक्स कि कैसे इसको इस बार फ्लोर पे लेकर आके प्रॉपर्ली शूट हम करें भी. बिकॉज इट्स अ फिल्म ऑफ अ बिग स्केल एंड उसके अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं. तो इसके लिए वो हर स्टेप ध्यान से लेना पड़ रहा है. तो आई थिंक द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर्स राइट नाउ आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. एंड होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम प्रेइंग दैट it gets on floor and we can bring a special story to the audience. सामंता वो it's only a producer's prerogative to answer that. Thank you so much. मिलते हैं. Okay, yes. Thank you. Okay, sir. अच्छा, विकी का मेरा दो एस्थेटिक क्लिनिक को मैंने. Yes, please. Again, एक मिनट. Yes. Vicky sir, look here. Thank you.